To the first video of area related to circle chapter 12. Let's talk about some basic formulas which we already know and some new formulas which we will learn in this chapter. The first formula which we already know is area of circle. So area of circle, as we know, is pi r square, where r is the radius, and obviously the unit will be, it is measured as unit square. The second formula which we know is the perimeter. Perimeter, or also known as the circumference. Circumference of the circle, that is 2 pi r. Now when I talk about perimeter of the circle, area of the circle, I am talking about this total part which is there inside. Okay, this is known as the perimeter of the circle. But when I'm talking about, sorry, the area of the circle, when I'm talking about the perimeter, I am only talking about this length of the outside path. Suppose you have a circular garden and you're walking on the path, right? That is what we are talking about, circumference or the perimeter. And here it is measured as only unit, right? Because there is only single length. यहाँ पे r square था तो unit square आ गई measurement की length, right? So this is what is the difference between perimeter. Perimeter means सिर्फ जो बाहर का path है, and area मतलब सारा part which is contained inside the circle, that is area. And then there is the difference between the unit, which I have already told you. Area is measured in unit square and perimeter is measured in units. Let's talk about next few definition, which is the sector. What do you mean by sector? आप कोई भी दो points ले लो circumference के ऊपर और आप उसे center से join कर दो. So you can see that this area, if you see this blue color, this is known as sector. So when we talk about sector, this is the third formula. Area of sector, we are always talking about minor sector. Minor means जो छोटा वाला sector है by default. Now area of the sector is the formula is theta upon 360 into pi r square. Again, it is measured as unit square क्योंकि ये area है. Now what is this theta? ये जो center angle जो बनाया है, that is theta. Okay, that is area of sector, which is also said as minor sector. लेकिन suppose करो मुझे next formula चाहिए, यानी कि I have to find the area of major sector. Now major word will always be written with the sector, then only you will understand कि वो major बता रहे हैं. अगर सिर्फ sector लिखा है तो मतलब minor की बात हो रही है. So अगर major sector निकालना है, so can I say it is area of circle, children, the complete circle, minus area of minor sector, right? These are the next formulas related to the sector. Now suppose I have to find the fifth formula, length of sector. Again, when I'm talking about sector, means I am talking about minor by default. So it is theta upon 360 into 2 pi r, and again it is measured as unit. Okay. Again, अगर आपको length of major arc चाहिए, sorry, major sector चाहिए, तो कैसे निकालोगे? पूरे perimeter ऑफ सर्कल से हम माइनस कर देंगे लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर, राइट? सो व्हाट डू यू मीन बाय, लेट मी एक्सप्लेन यू. लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर मीन्स सिर्फ ये कर्व्ड पाथ. लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर मैं नेक्स्ट फॉर्मूला देखूं विच इज 6, सपोज आई वांट perimeter of sector, don't you think it will be, again sector मतलब minor, it will be the curved path, that is theta upon 360 into 2 pi r plus r, right? क्योंकि जब मैं perimeter की बात कर रही हूँ तो सारा outside area आएगा, तो ये हमारा minor sector है, तो this will be the
formula of perimeter of the sector, or by default minor sector. Okay, so this is the next formula. Hope I am clear. Now suppose करो मैं next क्या है, suppose करिए कि मैं जो ए बी पॉइंट है इसको ज्वाइन कर देती हूँ, तो मेरे पास ये जो ब्लू पोर्शन है दिस इज नोन एज सेगमेंट, माइनर सेगमेंट. अगेन एक कॉर्ड जो है जो सेंटर से नहीं पास करता वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, माइनर सेगमेंट में और मेजर सेगमेंट. अगेन नाम से ही पता चल रहा है माइनर मीन्स छोटा, मेजर मीन्स बड़ा. नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर मुझे चाहिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. नाउ डोंट यू थिंक, मैं आपको एक कंस्ट्रक्शन करके दिखाती हूँ, डोंट यू थिंक इट विल बी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी. चेक करो, अगर मैं पूरे सेक्टर में से, ये मेरे पास पूरा सेक्टर था राइट, ये मेरे पास पूरा सेक्टर है, अगर मैं इस सेक्टर में से ये जो पोर्शन है ये पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, ये पोर्शन हटा देती हूँ, तो मेरे पास माइनर सेगमेंट आ जाएगा राइट. दिस इज हाउ वी विल फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. एंड द लास्ट फॉर्मूला of the chapter, area of major segment. Again ये बहुत simple है, that is area of circle minus area of minor segment. चेक करो, अगर मैं पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट हटा दूं तो मुझे दूसरा पार्ट क्या मिलेगा, मेजर सेगमेंट राइट. So these are all the formulas which are required to solve these exercise. Okay, so you should be aware of all these 8 formulas before beginning of the chapter, and you should understand what is meant by perimeter, what is meant by the term circumference, मतलब सिर्फ curved वाला portion right. Perimeter means सारा का सारा outside length. सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है. बाय डिफ़ॉल्ट जब सेक्टर या सेगमेंट की बात हो रही है वो हमेशा माइनर सेगमेंट की बात हो रही है या माइनर सेक्टर की बात हो रही है. मेजर वर्ड हमेशा लिखा होगा अगर क्वेश्चन में पूछा है तो. ओके, दैट इज ऑल द फॉर्मूलाज. वी विल बिगिन विद द एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. सी यू ऑल.